This video is for informational purposes only, based on personal research, and should not be considered as financial advice. It does not constitute any recommendation to buy, sell or hold any securities. Viewers are advised to conduct their own research. Hello, good morning, fellow friends, traders and investors. Thank you for taking the time to join this discussion. I hope overall आप लोगों का trading अच्छा चल रहा है. Those who are on the bullish side or largely prefer buying stocks, it's a good news that Nifty is now trading 24,000 close. And due to the latest ceasefire agreement between US, Israel and Iran has boosted the risk sentiment across the world, and majority of the indices are up. So one of my YouTube friends and asked about my view in HDFC Bank में मेरा view क्या है. So I thought it will be a good time to have an overall discussion in the banking segment, looking at some of the important stocks in the banking segment. So today's discussion is about that. But before the starting, I have a small announcement that the Rainbow community is now active and open. Those who are joining the Rainbow journey for the first time or renewing their access will get access to the Rainbow community, where I'm continuously in a process of building it up and improvement. Like today, I'll be adding 3 psychology videos and 1 video on bottom hunting into stocks. Now let's get back to today's main topic, that is the banking stocks. First, please note that for any kind of analysis, I'll either use the rainbow chart through which I do trading, or I'll use the line chart, which is very effective for trading. So currently I can see, first we'll take a quick look at the Nifty overall situation. It was thankfully I got a buy signal. Did some bull call spread as well. So overall looks positive, but did not expect this kind of move. What has happened? I was expecting positive, but not this much. This is the 2-hourly chart, and after quite a long time in Nifty, now I'm going to the daily chart. I have received a buy signal in the daily chart after a very, very long time since the March sell-off has started. Let me small this. थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. Since the sell signal, this is the first time I'm getting a buy signal here. But I'll expect not immediately super move. I'll expect the market to reach out to this my empty line, then go for a correction. And then we'll be able to say whether further upside is coming or not. Now before I move to the banking stocks, quickly एक बार banks का जो chart है, Bank Nifty. Though Bank Nifty is heavily influenced by HDFC Bank, but ये chart के साथ fair idea लग जाएगा कि overall banking space similar buy signal, and I'll expect a jump towards 55,800. मतलब further थोड़ा bullishness immediate term में बाकी है. Now, after you do the basic analysis, कैसे market को approach करना है is through the outperformance. Now I'll look at the outperformance chart. Outperformance में एक बार private bank को भी देखेंगे and definitely public sector bank. So this is the PSU bank and we are looking at the daily chart. Ab situation, this is not the PSU bank index. This is the PSU bank index by Nifty 500. Basically showing banks में उतना तगड़ा buying है नहीं outperformance में. What I could see, हम लोगों को IT में I had shown in my previous session कि IT में different scenario था. Today IT overall not doing well, but IT में outperformance. This is an outperformance chart, not individual chart. So outperformance chart, IT was notably bullish, reached our resistance and now correcting. But similar picture bank में है नहीं. We are getting some up move, but no super outperformance or a buy signal in outperformance. Let's look at the private bank segment. Previously it was public bank. Adjust the chart. Private bank का chart better है. Outperformance chart wise, private bank ka chart better hai. That means better opportunities possibly will get around private sector bank.
बिकॉज गवर्नमेंट बैलेंस शीट जो हम लोग का बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइस इज डाउन 15-20% फ्रॉम द टॉप, बट स्टिल सिग्निफिकेंटली हायर एटलीस्ट बाई 50% कंपेयर टू जो लेवल हमें मिल रहा था. So, public sector bank may come under pressure because of government policy for refinancing, giving extra loan to the refinery sector. So, in that case, private bank has a better chance to do well in this current environment, and market clearly दिखा रहा है कि private bank is in the outperformance compared to public sector bank, जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं still no notable buy signal. Now with this, let's get back to, I'll take up your queries also, but first let us look at the stocks. And थोड़ा daily chart and weekly chart का combination में हम लोग देख सकते हैं. And for stock, I'll have to use the stock master इस्तेमाल करेंगे. This is the asset master. Let me apply the stock master. And first देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का सिचुएशन. स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक, सारा सेक्टर आज बाउंस बैक कर रहा है, but no notable or visible buy signal. Yeah, without the indicator. We have a good Dow structure here, and also we have a good trend line breakdown. But trading में important है हम लोग का जो discipline या जो setup है, we have to follow that. So I'm not very eager to go for a Bank of Baroda. But technically speaking, there has been a bounce back and a trend line break. So Bank of Baroda in the daily chart for a short-term swing is strong. In the weekly chart, however, there is no Dow structure. मतलब अभी भी तगड़ा बुलिश है नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा. दिस इज अ ब्रॉड बेस्ड बाउंस बैक. एक दो दिन मार्केट जब काम डाउन हो जाएगा आफ्टर द इनिशियल मूव, तब जाके पता चलेगा कि विच स्टॉक इज स्टैंडिंग आउट. इफ आई अप्लाई द रेनबो चार्ट, इट इज क्लियर कि एक सेल चल रहा था, उसके अंदर एक करेक्शन हो रहा है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में, एंड फ्रॉम आवर वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया. Let's look at another stock which is big time up today. Weekly chart still very much bearish. मतलब not great for a long term swing position. But short term देखते हैं with the daily chart. Still no buy signal from my side, so I'll not be personally getting into these stocks. I'll prefer stocks जहां पे strength है. For example, metal sector I've highlighted कि Lloyd's Metal, Vedanta, where there was notable strength. Now let's look at through the daily chart. It is a bounce back, and ये जो chart pattern हुआ है इसको बोलते हैं dirty double bottom. So this is a notable chart pattern in the daily chart. कोई अगर short term swing खेलना चाहता है with the line chart, better to wait for a correction, means a new Dow structure. एक new Dow structure का मतलब है, sorry, यहां पे नहीं, path. At some point, let there be a correction, and once it is again breaking like this, that will be a good point of entry. Because currently if we jump in, the swing low is significantly नीचे है, तो stop loss काफी बड़ा रहेगा if you are entering the big quantity. And as I said, as a trader, it is important to follow जो discipline के साथ trading plan. So मेरे हिसाब से मेरे चार्ट में कोई बाई सिग्नल है नहीं, so I'll not be interested in today. Let's look at Maharashtra Bank. Much better chart. मेरे हिसाब से this is a much better chart. Even अगर consolidation phase में जाता है, it will have a good support base. So Bank of this Maharashtra Bank, Bank of Maharashtra largely, very likely over time now it is going to test up this important support level. Let's take a quick look at the weekly chart. Notably better आप देख पा रहे हैं compared to Bank of Baroda chart, but यहाँ पे सेटअप में सिग्नल भी डिफरेंट आता है, लाइक व्हाइट क्रॉस आउटसाइड, मतलब बोला जा रहा है कि थोड़ा वेट करने के बाद एंट्री किया जाए, बट दिस इज डेफिनेटली मच बेटर चार्ट. लेट्स लुक एट वाई लाइन चार्ट नाउ.
डेली वी हैव अ वेरी गुड वन। यहां पे क्लियरली एक डाउ स्ट्रक्चर के साथ नाइस ब्रेक हो रहा है। नाउ महाराष्ट्र बैंक कहां पे एक्सपेक्ट करेंगे, मिनिमम इस एरिया को टेस्ट करेगा, विच इज अराउंड 75, एंड इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है। सो ओवर टाइम likely to do Maharashtra Bank or Bank of Maharashtra likely to do very well. Let's look at Kannada Bank, friends. Again, a nice Dow structure, but lot of resistance है यहाँ पे। कहीं ना कहीं पे मार्केट में एक इनिशियल मूवमेंट के बाद एक करेक्शन आएगा, एंड वो करेक्शन के बाद वंस यू आर गेटिंग अ डाउ स्ट्रक्चर लाइक दिस, उससे क्या होगा, आपका एंट्री रिस्क काफी कम रहेगा। सो आई प्रेफर टू एंटर एनी स्टॉक्स विद द डाउ स्ट्रक्चर, नॉट इमीडिएटली जंप इन टू द बाई। बट वंस अगेन आप देख सकते हैं यहां पे भी काफी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल थे, दोज आर नाउ ऑल ब्रोकन। So further strength is expected in the banking segment. Let's quickly look at this. Was the stock master? I have an initial buy signal. Initial buy signal के बाद it reaches out to the empty line, which is the red line, and after that often comes the correction. So ये जो आज का जो मूवमेंट हो रहा है निफ्टी में, उसके बाद डेफिनेटली एक करेक्शन आने वाला है, एंड करेक्शन के बाद एंट्री करना सही रहेगा। Let's look at another stock, Central Bank. Similarly, एक बाई सिग्नल, बट क्यों बाई सिग्नल, एक जबरदस्त सुपर मूव हुआ है। यही मेरे सिस्टम में व्हाइट क्रॉस बाहर जाके, ये रहा व्हाइट क्रॉस बाहर जाके वार्निंग दे रहा है कि इमीडिएटली जंप करना, नॉट अ ग्रेट कैंडल टू जंप इन। जो हर स्टॉक में ही मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि आफ्टर एन इनिशियल बिग मूव, लेट द करेक्शन हैपन, and when you enter there, that increase the confidence level, हाँ stock further bullish है, and आपका stop loss छोटा हो जाएगा। But all the major stocks अगर daily chart देखा जाए is breaking this trend lines. So overall quite positive in the banking segment. Some segment like defense can be better with war में cease fire हुआ है, over नहीं हो गया, and जो war हुआ है काफी missile depletion and further demand रहेगा from some of the defense segments. So some segment can be better than banks, but overall banking sector भी काफी positive लग रहा है। Let's look at another chart, Indian Bank, significantly strong and very likely now will test the psychology level, that is the 1000. Let's look at this stock via the stock master. Very like, I like this kind of move जो हम लोग देखे थे महाराष्ट्र एंड इंडियन बैंक, एक बेस है इसको सपोर्ट करने के लिए। सो इवन इफ स्टॉक गोज फॉर कंसोलिडेशन, मेरा फोकस रहता है नॉट हाउ मच अ स्टॉक कैन गो अप, हाउ मच ड्रॉ डाउन लेस इट कैन बी। सो ऐसे बेस रहने से ड्रॉ डाउन रिस्क रिमेन्स लो। तो मैं कैसा मूवमेंट एक्सपेक्ट करूंगा इस स्टॉक में, ये लेवल जो है उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होगा साइकोलॉजी लेवल, विच इज 1000। मतलब 1000 रीच होने के बाद एक करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे स्टॉक में, एंड वंस दैट लेवल नाउ फर्दर करेक्शन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू गेट इनटू। कल ऑलरेडी एक बाई सिग्नल आया था इंडियन बैंक में, तो इफ एनीबडी हैड टेकन विद द बेस, इट इज अ गुड मूव टुडे। एंड मैं आज एक वीडियो भी डालने वाला हूं, हाउ टू डू द बॉटम हंटिंग combination of classical chart pattern, rainbow, buy signal, etc. This one is not good. Oh, this is a गलत है, this is actually गलत स्टॉक ही है। इंडियन ओवरसीज वाईओ भी गलत हो गया था। या दिस वन इज ऑल्सो कमिंग बैक इनटू, सारा सेक्टर ही देख पा रहे हैं कि क्लियरली एक स्ट्रेंथ में वापस आ रहा है। एंड अगर बैंक्स को आप देखेंगे वैल्यूएशन वाइज, उतना हाई वैल्यूएशन स्टॉक है नहीं। ऑब्वियसली वन रीजन इज कि बड़ा बहुत बढ़िया ग्रोथ तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, दैट इज वन रीजन कि पी रेशियो इज लोअर। बट सम ऑफ द बैंक्स जो अच्छे डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं,
तो आपको काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड मिलने वाला है, 2.7% डिविडेंड यील्ड, एंड से पीएनबी significantly price to earning is low. So not a very expensive stock valuation wise, majority of the banks, but बहुत बढ़िया growth भी expected नहीं है from the banking sector. This is the situation with the PNB, much worse. यहां पे जो हम लोग डिफरेंस देख पा रहे हैं आप लोग, इंडियन बैंक का चार्ट एंड पीएनबी चार्ट इज नोटेबली डिफरेंट। एंड सच बोलूं तो मेरे यहाँ पे मेरा अकाउंट है पीएनबी में, एंड देयर इज अ वेरी नियर बाय ब्रांच। अगर ब्रांच में जाएंगे, ब्रांच का हालत देखेंगे, सच में इन्वेस्ट करने का मन नहीं रहेगा। सो रैदर इफ यू लुक फॉर गुड क्वालिटी, मतलब एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के अच्छे क्वालिटी कंपनीज विच आर बिजनेस वाइज गुड ग्रोथ हो, और मे बी विद दैट सम स्विंग प्ले विद द बैंकिंग स्टॉक्स। सो उसके लिए चार्ट वाइज डेफिनेटली मच बेटर कि इंडियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक कंपेयर टू पीएनबी। थोड़ा लाइन चार्ट के साथ भी देखा जाए, डाउ स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं कि ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन ब्रेक है। बट ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का ये मतलब नहीं है कि दिस विल गो सुपर रन। ये हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था दैट इज ओवर। ये जो यहां पे कॉन्टिन्यूअस एक नेगेटिव डाउ स्ट्रक्चर बन रहा था, बियरिश डाउ स्ट्रक्चर वाज देयर, नाउ इट इज ओवर। सो वी कैन मोर कॉन्फिडेंटली से कि ये बियरिश जो प्रेशर था दैट इज ओवर, बट वी कैन नॉट से ओके इट इज रियली टर्निंग बुलिश एंड सिग्निफिकेंटली बुलिश हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह पा रहे। लेट्स लुक एट एसबीआईएन। सिमिलर चार्ट आप देख सकते हैं कि ओके एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, बट विल इट बी स्ट्रांगली बुलिश? एक पॉजिटिव बात है एसबीआई में कि ये जो 1000 साइकोलॉजी लेवल है, एसबीआई इज अबव दैट। सो अगर पीएनबी और एसबीआई का कंपैरिजन करा जाए, आई थिंक एसबीआई विल बी अ मच बेटर चॉइस। एंड एज इंडियाज बिगेस्ट बैंक, आई विल से वैल्यूएशन इज स्टिल नोटेबली लो। चार्ली मंगर had highlighted valuation level of 15. So 11-12 valuation wise it is low. One reason याद रखिएगा, because low growth is expected from the banking segment. Let's look at एक बार स्टॉक मास्टर, और एक चीज इंपॉर्टेंट हाईलाइट करूंगा। अब बाई सिग्नल तो है, नो डाउट अबाउट दिस इन एसबीआई, बट साथ ही साथ टन्स ऑफ रेजिस्टेंस है। डिफरेंस ऑफ चार्ट देखिए कि एक बार एसबीआईएन इज बिलो द बेस, whereas Indian Bank is almost above the base. So ऐसे stock choice करना where the downside risk is capped by these bases, ये जो base है 900 around area, those are much better choice. Let's look at UCO Bank का situation. Strong bounce back just in line with the overall market. White cross बाहर जाके मुझे वार्निंग दे रहा है, इट इज नॉट राइट वन टू जंप इन। ऐसे स्टॉक में जब हम लोग को बाई सिग्नल मिलता है, वेर इट गोज टुवर्ड्स द एम्प्टी लाइन फर्स्ट, मतलब कहां एक्सपेक्ट करेंगे, अराउंड 26-27, उसके बाद ये स्टॉक में एक करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट इट विल बी मोर क्लियर कि अच्छा ये रियली एक फर्दर स्ट्रेंथ बिल्डअप करेगा कि नहीं। वीकली चार्ट मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, इसलिए क्योंकि ये जो आज का मूवमेंट हो रहा है, ये समझिए कि मूवमेंट इज हैपनिंग विद इन अ लार्जर सेल ट्रेंड। हर एक मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक, एसबीआई मच बेटर चार्ट कंपेयर टू यूको, बट अगर हम लोग पीएनबी देखेंगे, ये जो बाउंस बैक हो रहा है दैट इज कमिंग विद इन अ बियर ट्रेंड। सो चार्ट वाइज एसबीआईएन, विच इज द बिगेस्ट बैंक public sector, is much better compared to what we can see in Punjab National Bank. Let's look at some other stocks. I'll come to your queries soon. जल्दी आप लोगों का क्वेरी लेंगे. No need to put question right now. ये फिर से देखिए, this is chart wise better compared to PNB. मैं लॉन्ग स्विंग के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरे
रूल फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. अगर व्हाइट क्रॉस आउटसाइड, स्पीड नहीं है, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द टेबल सो इट्स विजिबल टू. स्पीड आई मुझे मिनिमम चाहिए वीकली 10. Then the stock moves to a gem phase, means we can get awesome run. Let's now look at another chart के through line chart. Daily chart, similar picture, एक strong bounce back. अभी मत जंप कीजिए क्योंकि रिस्क बड़ा है. साइड अगर टेक्निकली देखा जाए, व्हाट इज द स्टॉप लॉस? इफ आई जंप से बाई राइट नाउ, स्टॉप लॉस इज अराउंड दिस 11. Just because I can't take it, we can't make the stop loss illogical. So always better होगा, generally speaking, कि मार्केट में जब बड़ा मूवमेंट हो, let a structure like this happen. And this will be a much better entry point. स्टॉक हो, ओवरऑल इंडेक्स हो. आज का जो मूव हो रहा है, just because of the ceasefire agreement, एक ब्रॉड बेस्ड बाउंस बैक आया मार्केट में. So these are the situation with the public sector bank. हम लोग चार्ट वाइज वी हैव सीन कि प्राइवेट इज बेटर. सो लेट्स लुक एट प्राइवेट सेक्टर बैंक. जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, और एक बार दिखाता हूं चार्ट वाइज. वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक थ्रू स्टॉक मार्केट की डाउन टर्न हो, खराब मार्केट सिचुएशन हो, वन ऑफ द बेस्ट वे टू लुक इज वाया आउट परफॉर्मेंस चार्ट. जैसे पीएसयू बैंक का चार्ट हम लोग और एक बार देख रहे हैं, ऑलरेडी देखे थे, एंड वंस अगेन वी आर वाचिंग. नॉट सिग्निफिकेंट बाइंग सिग्नल, whereas metal segment throughout has been stronger. तो बेटर परफॉर्मेंस हुआ है मेटल सेगमेंट में. से दिस इज द वीकली चार्ट. मेटल हैज बीन सुपर स्ट्रॉन्ग. दिस इज आउट परफॉर्मेंस चार्ट. तो बेटर और आसानी से रिलेटिवली बेटर स्टॉक्स मिलते हैं. नाउ इफ यू लुक एट द प्राइवेट सेक्टर बैंक इन द डेली चार्ट, देख रहे हैं मच बेटर चार्ट कंपेयर टू पीएसयू बैंक. बट दोनों केस में ये जो बाउंस बैक आज हम लोग देख रहे हैं, दैट इज विद इन अ लार्जर सेल ट्रेंड. और ये हम लोग का वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है रेनबो में. सो यहां से बाउंस बैक होना एक बहुत ही नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. वी जस्ट कांट से कि लॉन्ग टर्म रिवर्सल हो चुका है मार्केट का. बट डेली चार्ट वाइज दिस इज द प्राइवेट सेक्टर एंड दिस इज द पब्लिक सेक्टर. That means private sector chart seems to be slightly better than the public sector. Now let's go to the जो private sectors बैंक है. एक एक करके प्राइवेट सेक्टर बैंक को देखते हैं via the daily chart short term swing. एसेट मास्टर नहीं, स्टॉक मास्टर अप्लाई करेंगे. वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक इन एक्सिस बैंक. अब क्या एक्सपेक्ट करूंगा मैं एक्सिस बैंक? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट रेडी. थोड़ा कैश स्टॉक्स लेस देन वीकली करना पड़ेगा एज वी आर लुकिंग एट द डेली चार्ट. स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. आई विल एक्सपेक्ट सम करेक्शन एंड वंस ये बेस के ऊपर स्टैंड आउट करने चालू करेगा, दैट विल बी एन एरिया टू गेट इनटू एक्सिस बैंक. वैल्यूएशन अगर देखा जाए रिलेटिवली पॉजिटिव है सारे बैंक्स का, नॉट ओवर वैल्यूड है, विद इन द चार्ली मंगर लेवल. बट याद रखिए वन ऑफ द रीजन इज दैट नॉट सुपर ग्रोथ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बैंकिंग सेगमेंट. लेट्स लुक एट अनदर सेगमेंट. मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स आप देखेंगे लोअर पीई रेशियो है. This one is different from Axis Bank because it is above the base. So above the base होने से risk remains limited. 272 will be a good stop loss area and the initial target will be around 300 psychology level and this stop. थोड़ा लाइन चार्ट के साथ भी देखेंगे. वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक. ये ब्रेकआउट हुआ है 271 का. अब 272 will act as a base for Federal Bank. क्योंकि इफ अगर यही पे एंट्री करने का मन है, do better to do some lower quantity.
लेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस हैपन, सम पॉइंट पे ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे एंड उस स्ट्रक्चर पे एंट्री करना विल बी लो रिस्क ऑप्शन rather than immediately jumping to buy. अनदर बड़ा बैंक है इंडिया का आईसीआईसीआई बैंक, ये एकदम ही प्रेफर नहीं करेंगे। चार्ट देखिए, यहां पे एक पॉजिटिव डाउ स्ट्रक्चर है विदाउट इवन अप्लाइंग द रेनबो, it has a positive Dow structure, whereas ICICI Bank is just a jump on the news. So even if अगर चॉइस दिया जाए both has say buy signal, Federal Bank और ICICI Bank, I'll prefer Federal Bank. And ICICI Bank after the buy signal is reaching out to our main resistance. So यहां से करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, अगर एंट्री करना है उसके बाद ही करेंगे, पहले नहीं। लेट्स लुक एट इंडसइंड बैंक। ये काफी डाउन फेज में था पहले ही बिकॉज ऑफ इट्स लॉट ऑफ बैड न्यूज रिगार्डिंग इंडसइंड बैंक। बाउंस बैक नो डाउट, नेक्स्ट टारगेट इज 842 विच इज वेरी क्लोज टू द करंट प्राइस। एंड क्या दिख रहा है मुझे इज बाउंस बैक जो है विद इन अ लार्जर बियर ट्रेंड। एंड करंटली अगर इंडसइंड बैंक में जल्दी रिकवरी नहीं हुआ, like I'll say before the next month, this area of 846 will start to act as very strong resistance. So stocks are not ready, many stocks, not all of them. Like I'll show you a different chart. Just a deviation to give you a perspective. So Lloyd's metal. Weekly chart of Lloyd's metal is definitely much better from the weekly chart of IndusInd Bank. So when the market में जब recovery चल रहा है real, those are the leaders. They will come back much stronger. So आज का जो bounce back हो रहा है सारे banking sector and any other stocks, many of them are just a correction within a larger sell trend. Let's look at Bandhan Bank. Strong bounce back in the daily, tough resistance ahead at 163. 163, 165 area, very tough resistance. Let's go to the weekly chart. Not yet bullish. So not ready for a long-term swing play. But valuation-wise, many stocks remains relatively attractive. Bandhan is not that cheap. Cheap level is 15 for Charlie Munger reference. और जो क्वेश्चन आया था वो है HDFC बैंक रिलेटेड, इसीलिए आज मैं ये सेशन होल्ड कर, क्योंकि एक जन ने पूछा था यूट्यूब में इफ व्हाट इज माय व्यू ऑन HDFC बैंक। HDFC बैंक में सिंस द सेल सिग्नल बहुत तगड़ा सेल ऑफ हुआ है, ऑलमोस्ट 25%। अब एक सुपर सेल ऑफ के बाद ये जो बाउंस बैक दिख रहा है आज, ये बहुत नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। साथ ही साथ पॉजिटिव न्यूज, सो ये रेडी नहीं है कि लेट्स गो फॉर अ बिग जंप एंड गो फॉर अ लॉन्ग स्विंग इनटू HDFC बैंक। बट क्या फर्दर करेक्शन हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, बट वीकली चार्ट में बाई करने के लिए आई प्रेफर टू वेट फॉर अ बाई सिग्नल इन वीकली। बट डेली चार्ट आई डेफिनेटली, ये जो वीकली चार्ट का करेक्शन आप लोगों को दिख रहा है ये विजिबल हो जाएगा इन द डेली चार्ट। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये सेल सिग्नल था 11th February। For the first time since the sell signal, I've got a buy signal. I'll expect further correction and reach out to the empty line, which is around 850 area, 843, 850 area. And after that, I'll expect once again a correction, means एक जब bounce back होता है कि बड़ा sell off के बाद, whether आप लाइन चार्ट इस्तेमाल करें या एनी अदर चार्ट टाइप, बेस्ट है कि एक जोन कंसोलिडेशन बना है।
एंड उसके बाद सिग्निफिकेंट अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, एक बढ़िया चार्ट पैटर्न मिला, लाइक लेट मी शो यू अ पर्टिकुलर स्टॉक, से VEDL, वेदांता। I've highlighted this stock in class. एक ब्यूटिफुल बॉटम हंटिंग पैटर्न लाइक इनवर्ट शोल्डर, यहां पे लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर एंड बाउंस बैक। ऐसे चार्ट पैटर्न हो या एक अच्छा कंसोलिडेशन, उसके बाद बाय करने से रिस्क रिमेन्स सिग्निफिकेंटली लो, बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड स्टॉप लॉस, very clear, very good stop loss. These stocks tend to do very, very well. और मेनली ट्रेडिंग में कोई नहीं जानता कि सक्सेस कितना होगा, बिकॉज वेदर स्टॉक विल गो अप और नॉट, फ्यूचर कांट बी प्रिडिक्टेड। तो हम लोग का जो जॉब होता है कि जितना रिस्क कम रखा जाए, वेर वी विल नो फॉर श्योर कि अच्छा ट्रेड फेल हो रहा है। सो दिस पॉइंट कोई पैटर्न के साथ जाने से रिमेन्स वेरी वेरी लो। So I'll always prefer entry into this kind of stocks rather than जो हम लोग अभी देखें कि HDFC बैंक। बट साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि टेक नोट, चलो जो सेल ऑफ था, कैसे समझते हैं सेल ऑफ विदाउट एनी इंडिकेटर्स? आई प्रेफर इंडिकेटर्स, बट इफ इंडिकेटर के बिना जा रहे हैं तब है डाउ स्ट्रक्चर। डाउ स्ट्रक्चर इस पॉइंट पे था बियरिश। द मोमेंट ये स्विंग हाई टूट गया, then HDFC Bank daily chart में no longer bearish. It does not mean it will go up say super 20-30%. बट ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड ओवर हुआ है बेस्ड ऑन डेली चार्ट। बट अगर वीकली चार्ट देखा जाए HDFC बैंक का, वी कांट से डाउन ट्रेंड इज ओवर, बिकॉज नो डाउ स्ट्रक्चर। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं दैट इज मोर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी। Currently, if you try to enter HDFC Bank, what is your stop loss? Around this turn, 771. So how to play a short-term swing? First, mark these important levels. These are your area where it can stop. 850, I highlighted our important level. You can enter some, then wait for this structure. उससे क्या होगा, लॉस और जो रिस्क पॉइंट है नोटेबली कम हो जाएगा एंड आपका कॉन्फिडेंस विल गो अप। यस, ये स्टॉक फर्दर बुलिश है। या तो कोई पेशेंटली कोई एंट्री पॉइंट का इंतजार कीजिए। I'll take up your queries. Lot of comments दिख रहा है। I hope ये चार्ट आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है, या चार्ट इज विजिबल। और कुछ ही चार्ट बाकी है, से IDFC फर्स्ट बैंक, सिमिलर जंप अप, ट्रेंड लाइन मींस डाउ स्ट्रक्चर ब्रोकन मींस नो लॉन्गर बियरिश, बट कोई बढ़िया पॉजिटिव डाउ स्ट्रक्चर है नहीं। एंड वीकली चार्ट में इट इज स्टिल नो लॉन्गर बुलिश, बिग ड्रॉप। वीकली चार्ट में जब पॉजिटिव हो जाए यू कैन एक्सपेक्ट सम बिगर गेन्स कंपेयर टू डेली चार्ट। सो डेली चार्ट विद द स्टॉक मास्टर, वीकली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग जो बियर ट्रेंड था उसके अंडर एक वेरी नोटेबल करेक्शन हो रहा है। सिमिलर कोटक बैंक, रेनबो के साथ कोई अलग चार्ट इस्तेमाल नहीं करते। सो दिस इज कोटक बैंक, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, विद इन द डाउन ट्रेंड वी हैव अ स्ट्रॉन्गर कमबैक। चार्ट वाइज अगर देखा जाए, आई से एक्सिस बैंक has a much better chart in the weekly, though it's not still bullish compared to the Kotak Bank, which is significantly down. और ये जो करेक्शन आया है या बाउंस बैक, एक बहुत ही एक्सपेक्टेड रेनबो लेवल से आया है। सो मतलब दिस इज अ वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ द करेक्शन। इस नेचुरल करेक्शन जब होता है, वी कांट से कि बियर ट्रेंड इज ओवर। कोटक बैंक जब ये बेस के नीचे है, वेरी डिफिकल्ट टू give you a lot of good performance. But short term play के लिए, yes, market is now bouncing back. I'll expect further rise, possibly towards 390. RBL Bank,
ये बैंक में और एक न्यूज है, आई होप यू आर अवेयर कि बड़ा सॉवरेन फंड इज टेकिंग अ बिग स्टेक इन आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का वीकली चार्ट अगर देखा जाए, मच बेटर स्ट्रक्चर कंपेयर टू कोटक। सो आरबीएल का जब ये ब्रेकआउट हो जाए 325 एरिया का, यू कैन एक्सपेक्ट सम नोटेबल राइड इन आरबीएल बैंक। सो जो चार्ट स्ट्रॉन्गर है उसको मैं मार्क कर लेता हूं विद द रेड फ्लैग, एंड उन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं। येस बैंक better to avoid, rather go for a chart which has much better। एंड मैं तो बोलूंगा कि विद इन मतलब सारे सेक्टर में जो सेक्टर बेटर कर रहा है वहां पे चूज करना और बेटर रहेगा। जो मेटल सेगमेंट आई हैव शोन यू, मेटल सेगमेंट वाज स्ट्रांग, उसके अंडर वीईडीएल वाज क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न गिविंग अ रेनबो बाई सिग्नल, सो आई वेंट फॉर वीईडीएल। वंस अगेन वीईडीएल दिखा लेते हैं। ये रहा एक वीकली ब्रेकआउट, साथ ही साथ डेली में ब्यूटीफुल चार्ट स्ट्रक्चर बना है, हेड एंड शोल्डर, मच बेटर, मच लोअर रिस्क अपॉर्चुनिटी। सो ऐसे चूज करना मेरा प्रेफरेंस है, बट नन ऑफ माय डिस्कशन इज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सजेशन। आप लोगों के हिसाब से ही ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सो दैट्स अ क्विक लुक एट द बैंकिंग सेगमेंट ओवरऑल। एचडीएफसी बैंक का क्वेश्चन आया था, इसीलिए आज ये सेशन हम लोग होल्ड कर रहे हैं। फाइनेंशियल इट्स क्वाइट लो वैल्यूएशन पे मिल रहा है, कोई डाउट नहीं है। सो अगर कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन बिल्डअप करना चाहते हैं टुवर्ड्स एचडीएफसी बैंक, डेली चार्ट के हिसाब से इट इज अ फेयर एंट्री पॉइंट। इट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि यहां पे ही शायद बियर ट्रेंड खत्म हो एंड रियली कम बैक इनटू स्ट्रेंथ। एंड एचडीएफसी बैंक इज इंडियाज बिगेस्ट बैंक। सो ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर हुआ है। सो सम पोर्शन कैन बी बॉट, बट आई विल प्रेफर कि पूरा, जिस शायद आपके पास 1 लाख रुपए का आप बाई करते हैं, आई प्रेफर कि इस जगह पे हम लोग 30,000 या 1/3 से 1/4 पोजीशन एंटर करें, देन वेट फॉर अ डाउ स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल एंड एंटर फर्दर क्वांटिटी। सो दैट विल बी माय आइडिया टुवर्ड्स एचडीएफसी बैंक। आई होप ओवरऑल डिस्कशन आप लोगों को हेल्पफुल हुआ है। Thank you for watching my video. Now I'll be happy to take up any questions that you might have. Just a moment, मैं क्वेश्चन कर्नाटका बैंक मैं मिस कर गया, बट कर्नाटका बैंक एक्चुअली हैज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट। कर्नाटका बैंक, इसका चार्ट कंप्लीटली डिफरेंट है। ये देखिए, ये सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर चार्ट था कर्नाटका बैंक का, ये मैं मिस कर गया बोलने। एंड ये मेरे सेटअप के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट कर रहा है। ये मेरे सेटअप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है, इसको हम लोग माउंटेन टॉप कहते हैं। तो एक बार ये सस्टेनेंस हुआ, लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, मंथली चार्ट, एक मंथली ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हो रहा है। वीकली इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बिकॉज ओवरऑल मार्केट इज बाउंसिंग बैक, देयर इज अ न्यू एंट्री पॉइंट इन कर्नाटका बैंक विथ अ फुल बाई सिग्नल। सो ओवरऑल ये चार्ट का स्ट्रक्चर वाइज मच सिग्निफिकेंट है। सो ये लेवल भी बहुत स्ट्रांग है। बहुत बार क्या होता है कि एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ, फेल होके फिर से वापस आता है, एंड देन अगेन कंसोलिडेशन, एंड देन अगेन ट्राई टू अटेम्प्ट टू ब्रेक। सो ये 250 का जो साइकोलॉजी लेवल है कर्नाटका बैंक में 242, उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बट आज एक एंट्री पॉइंट है इन कर्नाटका बैंक। एंड ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इज स्ट्रांग। फाइनेंशियल अगर देखा जाए वैल्यूएशन वाइज रिलेटिवली लो वैल्यूएशन पे है, 7.5 is a very low valuation, and dividend yield is also 2.2, not great but okay dividend yield.
And thank you for starting the rainbow community. I had a question regarding Madho. Okay, which was this Sunday. The recent gap up will be filled before the. ये क्वेश्चन आप गलत पूछे सर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैड डन माय क्लास, व्हाट वाज द विजडम नंबर 3? नोबॉडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर. आज जो गैप अप हुआ है, विल इट बी विल पार्ट, नोबॉडी नोज. यही ह्यूमन माइंड का, बहुत लोग प्रेडिक्शन गेम में जाते हैं. आई एम नॉट इन टू प्रेडिक्शन गेम. अगर मुझे मालूम होता कि ट्रम्प विल गो फॉर सीज फायर, मैं मैंने बुल स्प्रेड बनाया 23,000 का बाय, 23,500 का कॉल सेल. आई वुड हैव गॉन फॉर 23,000 एंड 24,000 अगर मुझे पहले से मालूम होता. आई नेवर न्यू. मैंने बस निफ्टी में मेरा जो रूल है मैं उसको फॉलो किया, सिंपल तरीके से. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स ब्रिंग द ऑप्शन मास्टर टूल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट कि नोबॉडी नोज द फ्यूचर. ट्रम्प आपको कॉल नहीं किया, मुझे तो 100% कॉल नहीं किया ट्रम्प ने, एंड बोला कि सीज फायर होने वाला. रेनबो सेटअप में यहां पे बाई सिग्नल के बाद रीच द एम्प्टी लाइन एंड गिव अ करेक्शन, एक नेचुरल था. उसके बाद जैसे ही फुल ग्रीन कैंडल हुआ यहां पे, आई न्यू द नेक्स्ट टारगेट इट विल ट्राई आउट दिस एरिया एंड दिस एरिया. सो मैंने 400 500 का स्प्रेड बनाया. आई नेवर न्यू इट विल गो टू 24,000. ये पार्ट कोई नहीं जानता. सो विल इट क्लोज द गैप? नो, आई डोंट नो. तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्लोज द गैप? ओके, एक सिंपल तरीके से सोच सकते हैं. लेट्स कैंडल जो मादो के हिसाब से बोला जा रहा है, इंडेक्स ले रहे हैं सिमिलर फॉर स्टॉक्स. आज मूड सुपर बुलिश है. अगर क्लोजिंग करना है तो इसको ब्रेक करेगा, फॉर एग्जांपल 821. दैट मीन्स अनलेस दिस लेवल इज ब्रेकआउट, वो पॉसिबिलिटी प्ले होने का चांस नहीं है. दैट मीन्स एज अ ट्रेडर योर जॉब इज टू प्लेस दिस अलर्ट, एंड देन व्हेन दिस इज ब्रेकिंग डाउन, you will think, okay, you don't know whether it will fail or again Trump will say, hey, now deal done. What we will do कि there has come a possibility कि ये गैप क्लोज होगा. सो उस जगह पे आप दो टाइप ऑफ ट्रेड ले सकते हैं. एक, चलो एक बियर पुट बनाते हैं. दीज आर नॉट ट्रेड सजेशन, मैं आइडिया बता रहा हूं. एक ट्रेड यहां पे, एक बियर पुट, चलो 800 पुट बाय एंड 600 एंड से 200 पुट सेल. और बुल पुट, ये 24,000 का पुट, सॉरी बियर कॉल, 24,000 का कॉल सेल, 24,100 का कॉल बाय. टू प्ले आउट द पॉसिबिलिटी विथ नो चांस ऑफ गारंटी ऑफ सक्सेस, विथ अ क्लियर नॉलेज कि ये आइडिया जो मेरा था कि अच्छा गैप क्लोज, वो फेल हो जाएगा मोमेंट दिस वन इज ब्रेकिंग डाउन. बट nobody can predict whether today will be the day or will it close today or maybe tomorrow. Those parts remain always unknown to the trader. इसीलिए गेम है रिस्क मैनेजमेंट का भी. कैन यू लुक एट ABRL फोनिक्स लिमिटेड? I'll look at it, थोड़ा बाद में देखते हैं. लेट्स लुक एट इफ HDFC बैंक, प्रसाद जी, वी हैव डिस्कस्ड. नेशनल एल्यूमिनियम. नेशनल एल्यूमिनियम का, बिफोर आई लुक टू द चार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. अनुपम जी का क्वेश्चन है ये. नेशनल एल्यूमिनियम ये काफी राइज हुआ था, एंड रेनबो मेंबर माइट रिमेंबर कि हम लोग एकदम बेस पे एंट्री कर पाए थे. बट नेशनल एल्यूमिनियम आज स्ट्रगल कर रहा है डिस्पाइट ओवरऑल मार्केट बढ़ने के बावजूद भी. बिकॉज ये स्ट्रेट ऑफ हरमास जो है, जो ईरान का, वहां पे क्लोज होने के वजह से एल्यूमिनियम सप्लाई डिसरप्शन वाज देयर. एल्यूमिनियम सप्लाई डिसरप्शन हुआ था. इसीलिए एल्यूमिनियम प्राइस अगर देखा जाए, इफ यू लुक एट द एल्यूमिनियम प्राइस, इट हैज गॉन सिग्निफिकेंटली हायर. नाउ एल्यूमिनियम के साथ लेट्स उसके ऊपर नेशनल एल्यूमिनियम प्लेस करते हैं. देख पा रहे हैं क्लोज रिलेशनशिप हो. मतलब ये एल्यूमिनियम प्राइस जो बढ़ा था,
उसके साथ साथ नेशनल एल्यूमिनियम का प्राइस भी बढ़ा था। आज क्या हुआ, न्यूज क्या आया, सीज फायर एंड ईरान विल अलाउ पासिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज नॉट विदाउट फीस। ईरान विल डिमांड फीस। दैट इज अ बैड न्यूज फॉर अस। गुड न्यूज अभी चेंज नहीं हुआ। Anyway, I'll coming to that point later, but that is the reason national aluminium is not able to move up today. अब चलते हैं कि नेचुरल एल्यूमिनियम का ही चार्ट देखते हैं। आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं कि व्हेन टू एग्जिट। मार्केट आपको क्लियर आइडिया देगी। आप ट्रेड में अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, नॉट एन इन्वेस्टर लाइक वॉरेन बफे हु सेल्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, then you want to sell when the market is no longer bullish. When at this point future is unknown, but at this point when market will be no longer bullish, after this breakdown in the weekly chart, if you had entered early and riding a long trend, it is better weekly chart. That means ये level का breakdown हुआ, no confusion, market has turned bearish. At least not bearish नहीं, चलो bullish खत्म हो गया. That will be your exit point. National Aluminium. Now let's look at the valuation also. Still on the lower side of the valuation. But National Aluminium को जैसा मैंने दिखाया मूव करा रहा था aluminium price. So if aluminium price starts to come down, ये स्टॉक को हैम्पर करेगा। करूर वैसा बैंक भी देखते हैं। एक ये बैंक भी थोड़ा शायद मिस हुआ है। I'll trying to answer as many query as possible. करूर वैसा बैंक सिमिलर, लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। आज बिग जंप हुआ है करूर वैसा बैंक में। लेट्स रिमूव द बैकग्राउंड चार्ट। नेशनल एल्यूमिनियम को हटा देते हैं। ये जो चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है, यहां से लाइन ड्रॉ कीजिए। ये जो पोर्शन है स्लाइटली हायर है। इफ द हायर पोर्शन, द सेकेंड वन, नॉट द फर्स्ट वन, सेकेंड वन अगर विद इन द गैप, ये जो थोड़ा ऊपर इज 5% के अंदर है, इसको बोलते हैं डार्टी डबल बॉटम। डबल बॉटम का एक वेरिएशन यू कैन, मैं बना नहीं रहा हूं, यू कैन रीड इट अबाउट in different books. So if it is a double bottom or dirty double bottom pattern, which is a good pattern, then you know what is the breakout level. ये रहा. That will be a good entry point. Now I'll prefer to look the chart for my trading through the stock master. No, I'll not buy at all. It is background red. I'll prefer not to go with Karur Vaisa Bank. क्योंकि एज ए ट्रेडर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो माई ट्रेडिंग प्लान, जो हर वक्त पैसा नहीं देता, बट इन द लॉ, जब मैं मेजोरिटी टाइम गिव्स मी मनी एंड इट इज मेजोरिटी टाइम करेक्ट इन प्रेडिक्टिंग। जो हर चार्ट से टीसीएस फॉर एग्जाम्पल rightly gave me signal, rightly gave me buy signal. So as a trader, I'll have to show patience. So I'll not go into Karur Vaisa at all. TCS I have highlighted. TCS में देखिए, अगर मान लेते कि आपके पास यू डोंट हैव द रेनबो सेटअप, then always look for these two pattern. Double bottom, let the break happen, जो TCS का ब्रेक था 2404, और inverted head and shoulder. ये रहा MCX. Weekly chart, beautiful inverted head and shoulder and big move. These two patterns are one of the best to trade with. So आप अगर यही डिसिप्लिन ला पाए कि I only buy when these two patterns are there,
and I go more quantity when Nifty is bullish in the weekly chart, your performance will significantly enhance. If you keep on buying every bounce back without a good chart structure pattern, then your risk significantly goes up. So let's look at some of the Phoenix and question आया था Cummins. जल्दी मूव करने के लिए I'll avoid the line chart and have a quick look. This is the MCX chart, a new comeback, no doubt about this, new strength. So MCX will looks like further will continue. Phoenix Mills Limited बाउंस बैक चल रहा है, अभी भी रेडी नहीं है मेरे हिसाब से. आई प्रेफर टू इट गो अबव द बेस, एक बेस बनाए उसके बाद बाउंस बैक. लाइन चार्ट अप्लाई कर रहे हैं तो नो चार्ट, स्पेशलाइज चार्ट स्ट्रक्चर, सो आई नॉट प्रेफर टू गो. डेली चार्ट थोड़ा बोल सकते हैं कि इफ इट इज से टू 1475 एंड या विद इन 5% वी कैन कॉल इट अ डर्टी डबल बॉटम. सो इसका डर्टी डबल बॉटम का एक ब्रेकआउट लेवल एंड सेकेंड ब्रेकआउट लेवल. सो चार्ट, लाइन चार्ट के हिसाब से एक डेली चार्ट में ब्रेकआउट हुआ है. इमीडिएट जंप मत कीजिए. अगर आपको एंट्री करने का मन ही है सो वेट कीजिए. एक न्यू डाउ स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पे बनेगा ही 100%, एंड वो आपको गाइड करेगा ही. से वीकली चार्ट टीसीएस 100% डाउ स्ट्रक्चर गाइड किया. से निफ्टी प्रीवियस जो बॉटम बना 100% डाउ स्ट्रक्चर गाइड किया इस जगह पे. सो पेशेंस रखिए, ढूंढिए कहां पे वो ब्यूटीफुल चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, उस जगह पे एंट्री पॉइंट का सोचिए. टीटीएमएल, टीटीएमएल टाटा टेली सर्विसेज बिल्कुल नहीं. डाउ स्ट्रक्चर है नहीं है वीकली में. डेली इज देयर एनी ब्यूटीफुल पैटर्न? नो. आज का जो जंप बैक पूरा फुल सब में जंप बैक हो रहा है. निफ्टी 1000 पॉइंट के पास आप है ऑलमोस्ट. सो एक नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. टीटीएमएल इज इट अ गुड कंपनी ऑल्सो? अर्निंग्स नहीं है. कांट वी फाइंड बेटर? सो बहुत सारे स्टॉक्स है. आई विल नॉट लाइक दिस वन. प्लस इट हैज रीच द एम्प्टी लाइन. आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? करेक्शन. एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रीच हो चुका है. सो दीज आर द स्टॉक्स सर. ऐसा स्टॉक्स ना चूज करेंगे तो बेटर रहेगा. लेट्स लुक एमसीएक्स. हम लोग दिखाए सर कि इट्स ऑलरेडी इन द बाय मूव. बीएससी लिमिटेड, एमसीएक्स, सीडीएसएल एक ऐसा स्टॉक है जो आप छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज दीज आर मोट स्टॉक्स. इवन इफ दे डिक्लाइन, वेट पेशेंटली फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी. ये देखिए न्यू ब्रेकआउट इन बीएससी. सो फर्दर राइज में एक्सपेक्ट करूंगा. बीच बीच में करेक्शन तो रहेगा बट फर्दर राइज आई एक्सपेक्ट. आज का जो अप मूव हुआ है फिर से रिटेल प्लेयर्स आ जाएंगे, ट्रेडिंग बढ़ेगा. लाइकली बीएससी, बट इट इज नॉट अ लो वैल्यूएशन स्टॉक एट द मोमेंट. काफी हाई वैल्यूएशन है. ये खराब चीज है बीएससी का, बट अदरवाइज दिस स्टॉक इज फैंटास्टिक. ये जितना, ये ऐसा स्टॉक आप चाहते हैं जितना गिर जाए. और एक स्टॉक दिखा रहा हूं एनएसडीएल. ये सब स्टॉक में मोट है. मतलब मोट का मतलब है कोई आसानी से एनएसडीएल का चैलेंजर नहीं बन सकता. सीडीएसएल का स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बैरियर है. दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स जितना गिर जाए उतना ही बेटर. यू कैन बाई चीपर एंड होल्ड एंड नेवर सेल. नेवर. हर स्टॉक सेम नहीं है. दे विल रिमेन इन बिजनेस फॉर 15-20 years. एनएससी, बीएससी अब हो गया ऑलमोस्ट 40-50 years in business. These stocks treat them differently. And whenever they drop big, look for good entry points. Say daily chart,
With rainbow or without the rainbow, you can see a comeback. बियरिशनेस खत्म, एक बढ़िया डाउ स्ट्रक्चर बनने दीजिए एंड यू कैन गो फॉर एनएसडीएल एंड डोंट सेल दी स्टॉक्स. एनएसडीएल अगर देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत लंबा जो ट्रेंड लाइन चल रहा था उसका ये ब्रेकआउट करने जा रहा है. तो एक डाउ स्ट्रक्चर आने दीजिए, कहीं ना कहीं पे आएगा ही, एंड इंटर करने का चांस लीजिए. एंड दिस काइंड ऑफ स्टॉक शुड रिमेन इन द पोर्टफोलियो फॉर एवर. अंकुर जी का क्वेश्चन, रेनबो सेटअप इज अवेलेबल टू द रेनबो कम्युनिटी मेंबर्स ओनली. वॉल्यूम इज इंक्रीज. एक्चुअली मेरा गला थोड़ा खराब है, शायद इसलिए आपको वॉल्यूम कम लग रहा है. आई हैव इंक्रीज द वॉल्यूम, सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन. आई ट्रेड स्टॉक्स ऑन वीक, शुड आई शिफ्ट टू डेली एंड ब्रॉड मार्केट? एंड नो, डोंट चेंज द टाइम फ्रेम. आप इंतजार कीजिए, और वीकली में भी चार स्टॉक्स मिल रहे हैं. जैसा मैंने दिखा कि आप आपके पास कितना पैसा होगा, करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़. यू डोंट हैव टू बाई ऑल द स्टॉक्स. उतना पैसा आपके पास है नहीं कि टू बाई एवरी स्टॉक. देयर आर अपॉर्चुनिटीज. लुक एट द बेस फॉर्मेशन, beautiful base formation. Look at the stock which is getting ready, not fully ready. कहां से ब्रेक करेगा? होनासा. Once it breaks via this, you know where it heads. कहां तक जाता? First, this will want 370, which will be still good 20%, and definitely break the mountain top. So opportunity weekly में बन रहे हैं. Now, when you move to daily, just because weekly में you are not putting efforts or not finding stocks, just because jumping to daily is not a great idea. डेली में आ रहा है, फिर से उस हिसाब से प्लान बनाए. दोज आर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. और उसमें भी आज ब्रॉड बेस बाउंस बैक हुआ है. आपको डेली में करना क्या चाहिए कि फर्स्ट लुक एट कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है बेस्ट. कैसे फाइंड करेंगे? चलिए, 2 आवर चार्ट. यू हैव द रेनबो सेटअप, आई थिंक सो. यू आर अ रेनबो मेंबर. सो अब देखिए कि 2 घंटा जो शॉर्ट टर्म चार्ट, कौन है वो? डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है. दिस इज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग. ऑटो, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक, शॉर्ट टर्म चार्ट. अब डेली चार्ट में आपको करना क्या है कि देखना है कि हु आर द वंस, कौन है वो ऑटो स्टॉक्स, ये 13 में से विच हैज अ बेटर चार्ट. डेली चार्ट से बजाज ऑटो, और यू हैव अ फोर्स मोटर. फोर्स मोटर ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, क्लियरली फ्रॉम द चार्ट. महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्ट्रॉन्गर बाउंस बैक कंपेयर टू द फोर्स मोटर. अब आज जो मूवमेंट हुआ है, अशोक लेलैंड फॉर एग्जांपल 12% अप. इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू जंप ऑन टू इमीडिएटली. इतना शार्प मूव के बाद एक करेक्शन बहुत बहुत नेचुरल है. लेट दैट हैपन. फिर से कोई चार्ट अच्छा स्ट्रक्चर बनाए, देन एंटर. उससे क्या होता है? एंट्री रिस्क रिमेन्स लो. बाकी लोग सोचते हैं कि गेम इज इन द एग्जिट. गेम इज नॉट इन द एग्जिट, इट इज इन द एंट्री. एंट्री जितना बढ़िया हो, रिस्क उतना ही लो रहता है. एंट्री अगर खराब है, देन द रिस्क गोज अप. सो ऐसे सेगमेंट सर्च कीजिए. अब अगर डेली में प्लान है कि विच वन इज डेली एंड 2 आवर कॉम्बिनेशन में कौन सा सेगमेंट से, लुक एट डिफेंस. उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है. बिकॉज वाई? बिकॉज ही सीज फायर. सो डिफेंस एक सेटबैक लिया है. वाई ऑटो इज अप सिग्निफिकेंटली? बिकॉज पेट्रोल प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन. वेर एज एनर्जी सेगमेंट आज सफर कर रहा है. हम लोगों को आईटी इंफोसिस कैसे मिला था? सिंपल, मैंने देखा था कि आईटी सेक्टर सिंस मार्च स्टॉप डाउन परफॉर्मिंग, थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है.
एंड उसके अंदर फिर आसान था ढूंढने में कि इनफिस इट वाज गिविंग अ बाय सिग्नल। अब डेली चार्ट का ट्रेडिंग मतलब चलो 1300 बाय, आई हाईलाइटेड 1300 बाय, अराउंड 1350 सेल। यहां पे लगेगा कि अच्छा मैंने तो 4% ही कमाया, बट 4% नहीं, 4% आप कमाए एक वीक में, विच इज 200% एनुअलाइज्ड। और बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर इफ यू कैन डू 30%, 25%, फैंटास्टिक, यू आर बीटिंग एवरी म्यूचुअल फंड। तो डेली चार्ट के हिसाब से माइंडसेट चेंज कीजिए। वीकली इज लॉन्ग टर्म स्विंग प्ले। डेली चार्ट में अगर गलत है आप बार बार एंट्री एग्जिट से खर्चा बढ़ जाए, सो बी केयरफुल ऑन दैट फ्रंट। This question deals my observation. These two line cross, most probable stock give good move, marked with arrow. Okay, got it. But I'll explain. I've explained this कि जब ऐसे फॉर्मेशन आता है, मार्केट एक शेक ऑफ करता है, ये दिखा आ जाता है वो फॉलिंग एम्प्टी लाइन पे, जो डेल का क्वेश्चन है, मोर रिलेटेड टू द रेनबो सेटअप। फॉल्स आके वही रेड से वो पूरा घूम जाता है। सर व्हाट आउटलुक 3 to 6 months? ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये लास्ट वाई वांटेड टू हाईलाइट, जहां पे हाउ डू आई गेट रेनबो रीडिंग सिग्नल्स। जो लोग रेनबो कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड कुछ लोग पूछ रहे हैं रेनबो कम्युनिटी के बारे में डिटेल्स। श्योर, लास्ट फ्यू यही क्वेश्चन ले रहे हैं, बट उससे पहले एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा रिगार्डिंग स्टॉक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट डे भी मैंने जो सेशन लिया था फ्री इन लाइव मार्केट टॉक, I highlighted market is very bearish, and possibly the most bearish I have seen it in the, this is a long term chart. The background color change हुआ है because of such a strong bounce back. ये हम लोग के possibility में था. When we get a sell signal, two possibilities. Either it will drop to the empty line and correct, or after the sell signal will come a correction. As this is background turned yellow, it is signaling that the scenario that after sell signal a correction is coming, जो आप लोग देख पाएंगे in the, if I change it to the weekly chart. After sell signal reached empty line and then came a correction. If I bring a candle, ये देखें, ये corrections का मतलब ये है, these are natural correction. With rainbow what helps me to understand the market structure. जब एक नेचुरल करेक्शन आता है, दैट डज नॉट मीन द ट्रेंड इज ओवर। मतलब ये जो मंथली में हम लोग देख रहे हैं, दिस इज फुल्ली नॉट ओवर, नंबर वन। सेकेंड, दैट वीडियो आई ऑल्सो हाईलाइटेड द रिस्क इज नॉट द ईरान वार। इस बार का रिस्क जो है मार्केट का इज नॉट द ईरान वार, मार्केट का रिस्क इज द इंटरेस्ट रेट्स। Interest rates have broken a very, very long-term downtrend. And you can go study in the AI or anywhere you like. When interest rates go down, automatically asset price go up. For the last 40 years, what we have seen, always interest rates going down. But interest rates don't go down all the time. They also go up. And these interest rates are closely related to the world interest rates. You cannot say, sir, this is the US interest rates and I don't care, because our rates move closely. Interest rate is the risk, not the Iran war. And with oil price still, it was 60 before the war, 55, 60.
फॉल के बाद भी स्टिल इट इज एट $95 एंड इट इज नॉट द करेक्ट ऑयल प्राइस, ये है पेपर ऑयल प्राइस. करेक्ट ऑयल प्राइस इज डेटेड ब्रेंट, DATED, डेटेड ब्रेंट, जो फिजिकल ऑयल प्राइस है, या ओमान ऑयल प्राइस, या दुबई क्रूड ऑयल प्राइस. These are down, but not significantly down. So even if the war is over, very, very unlikely कि immediately price will drop towards back to 60. And this increases the risk of inflation and interest rates. This is the much bigger risk for the market. Now what the scenario will play, I'm expecting it to play out. I can't predict. I'm just expecting as per the structure. With the help of my setup, I'm just expecting this structure. Ki if rainbow structure holds in the monthly chart, then likely there will be another 2 months of correction. 3 correction maximum. If bear trend is intact. And then will start coming down again. So I have not personally turned very bullish, but I've also in terms of trading, like in the 13th April expiry, I did lot of bull call spread. क्योंकि मार्केट मुझे दिखा रहा था टाइमिंग वाइज कि ये बुलिश हो चुका है, तो मुझे बुल कॉल लेना था. And I have also squared off significantly. I was holding June, December. June I made profit, quite a good profit, but May slightly in loss. Loss है मेरा because I'm holding short position. So एक mixed है कि this one I'm on the buy side in the short term, but overall long term I don't think bearishness is over. And ये फेज का प्रॉब्लम ही ये है कि हाई फ्लक्चुएशन, जो आप कोविड का अगर ट्रेड किए हैं, तो देयर वाज बिग अपसाइड जंप आल्सो विद इन द डाउन ट्रेंड. सो इमीडिएटली मैं कह नहीं पा रहा हूं कि इट इज कंप्लीटली ओवर. Now, last question about the rainbow community. Rainbow community is a community I'm building up inspired by one of the जो मार्केट विजर्ड में आए थे, एड सेकोटा. एड सेकोटा वाज जो जैक श्वेगर का मार्केट विजर्ड बुक है, यू मस्ट बी नोइंग, ये रहा, उसमें वन ऑफ द मार्केट विजर्ड. So rainbow community is to some extent inspired by Ed Sekota. Here I'm decided we are going into different asset class. I'm creating and will continue to create different videos. I take out classes throughout the year. And trading may, you don't have to believe me, you can read Mark Minervini also. You must have heard of him, Mark Minervini, one of the great trader. Vivek sir has done face-to-face with him. He has also highlighted our as a trader job is, can we with discipline follow a trading plan? Now, if anybody has given you idea you need indicators to become successful trader, that is incorrect. That is not true. But definitely indicators help, at least it helps me. And with the rainbow, it is much easy to have a trading plan. Easy to build that right mindset. Because without the right mindset, just because you have an indicator, that will never make you successful. Otherwise, जो लोग भी रेनबो ज्वाइन करते सबको सिमिलर परफॉर्मेंस होता. That's not possible. So rainbow helps in building that mindset. For example, when you go to a TCS and you this sea of red, it will be very difficult to hold on to the positions. Because before we recognize classical chart or any pattern, our brain is tuned to recognize colors.
So with the color condition, with our trading plans into different asset class, it helps to build up the mindset. And I take classes throughout the year in the Rainbow community. And I'll continue to build separate videos. Like 4 videos are going in Rainbow community today, 3 on psychology, and 1 on bottom hunting. How to do bottom hunting into stocks in the daily chart. And this is, I'll continue to build up throughout the year. और बेहतर करेंगे. So that's about the Rainbow community. If you want to join, all you have to do is go here and connect on WhatsApp. And those who are the Rainbow members, if anyone asks them, you will see I've highlighted this. This journey will save you way more money than you will make. So a lot of people were able to exit at the top. If we exited around here with the rainbow signal, it was an awesome exit. So many different setup exist within the rainbow journey: option setup, stock setup, commodity. It helps in trading, but definitely not mandatory for success. Mandatory for success is the mindset buildup. That you can, if you want, you can do using the line chart as well. If you decide, no, I'll have the discipline that I only will buy when there is a inverted head and shoulder and double bottom, I buy nothing else, and you continue to follow that, the mindset will start building up. You'll have to stop listening to others, and you'll have to stop trying to predict. What everybody wants does not work. If everybody wants to how much the Nifty will go tomorrow, you don't want to know. Because कल किसी ने मुझे नहीं पता, कोई नहीं बोला था hey, Nifty will be 24,000 tomorrow. आज जैसे Nifty बढ़ा, many now everything will come back, Nifty will reach 25,000, etc. So those are rubbish. If you stop avoiding the rubbish stuff, come to a discipline. No, I only say Nifty buy. My chart is weekly. For example, you decided. Then will you buy this jump? No, because I buy only when there is a Dow structure. That is the discipline. Once you start building the discipline over the long term, you get rewarded. That is what the trading is about. Rainbow website sign in. Yeah, website is activated, but this is Rainbow community is open to those who will take access for the first time or renewing their access. हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं. If you are a Rainbow member, आपका access अभी भी है. You are getting all the classes. Let the Rainbow community build up more. So you can come because you have already access to a lot of videos via e-learn markets. So immediately hurry करने का जरूरत नहीं. Anyway, if you say renew, you get extension of 1 year added. So there is no extra cost of joining the Rainbow community. Those who are joining the first time, this is my website. And these are 2 free sessions. Live market talk, this Thursday coming up, and Sunday stocks talk. Anybody can join in, coming here, getting the link. Link will come here on the website. That's all, friends. Thank you so much for attending today's session. Best wishes. This video will be available for everyone's view in the YouTube. Thank you so much. And as always, happy trading, happy investing.